Jai Guruji auntie, are you there? I think we are having some internet problem with Sonia auntie's internet, so she'll just join back. संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। आज थोड़ा मेरे फोन से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, सो आई एम यूजिंग माय डॉटर्स फोन। और कल का हम रिकैप देख लेते हैं संगत जी। कल हमने पढ़ा था दैट माइंड हैज न्यूमरस पावर्स, और माइंड में अगर मतलब इतनी शक्ति है, इसको अगर ट्रेन किया जाए तो इट हैज पावर टू पेनिट्रेट इनटू द डीपर लेवल्स ऑफ वन बीइंग। एंड देन फिर आगे जाके हमने चक्रवर्ती स्वामी जी के बारे में पढ़ा कि वो बहुत बहुत फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं। जब उन्होंने रिनाउंस कर दिया था दुनियावी चीजें, ही आल्सो बिकेम अ स्वामी, एंड ही वाज आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ स्वामी रामाजी's मास्टर। उसके बाद हमने पढ़ा कि हाउ ही डिमॉन्स्ट्रेटेड कि किस तरह माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, किसी के माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, but provided if it is used for good reason, if it is used for helping others. So he also influenced the mind. हमने देखा था किस तरह उन्होंने जज का माइंड भी इन्फ्लुएंस किया, and then we learned that there is only one absolute reality of all in all the forms of the universe. So इस तरह से हमने देखा कि reality एक ही है, बाकी तो सब multiple है, manifestations जो बाकी हैं सिर्फ multiples हैं उसके। And then all the things of the world are like zero, and without being conscious of that one reality na, they have no value at all. And when we remember the one reality, तो life हमारी जीने लायक बन जाती है, worthwhile बन जाती है। Then we also learned about Aghori Baba, that how he healed Pandit with his finger. He touched, that उसका जो cut लगा था, he healed it instantly by touching with his fingers, and no scar was left there. फिर उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, कहते ये मैटर और एनर्जी का ही तो है सारा खेल, and he could change one form of matter to another form of matter, and he had the power to transform matter into different forms. फिर हमने उस laundry man के बारे में भी जाना, जिनके he lost his donkey and he was so worried, इतना literally उनको shock लगा that he went into a trance, and people took his trance for samadhi, because people are so gullible, they thought he is into deep samadhi and started flocking, और उस तरह से उसके disciples भी बन गए। पर स्वामी जी ने हमें ये सिखाया, जिस डिजायर से आप मेडिटेशन करते हो ना, वो मैटर करता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं विद सिंगल डिजायर फॉर एनलाइटनमेंट, देन डेफिनेटली यू कम आउट एज अ सेज। और उस तरह से हमें थ्रू मेडिटेशन जो माइंड है ना पॉजिटिव बन जाता है, वन पॉइंटेड बन जाता है, अंदर की ओर जाता है। एंड फॉर मेडिटेशन प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड इज ऑल्सो इसेंशियल। और मेडिटेशन का क्या मतलब है? मेडिटेशन मीन्स एक्सपेंशन एंड वरी मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। फिर हमने ये भी जाना आगे जाके, बहुत खूबसूरत कहानी हमने पढ़ी, किस तरह से गोपीनाथ जी जिनको स्वामी जी ने लगा लिया था, बिकॉज स्वामी जी नहीं चाहते थे इतनी संगत आई, इतने डिसाइपल्स हो, तो कहते थे इतनी बारी मंत्र करना पड़ेगा, 2000 बारी करना पड़ेगा। तो गोपीनाथ जी जब करने लगे, he got so immersed, he got so engrossed, that he became oblivious of everything, और हालांकि he was a treasurer in the Reserve Bank of Kanpur, and how we learned how he was helped by one of the sages, जो गोपीनाथ जी की फॉर्म लेके सारे काम कर दिए, because he was absorbed in chanting God's name. और क्योंकि लास्ट में तो हमने यही जाना ना, जो सेजेस होते हैं ना, वो बहुत 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 बेनेवलेंट होते हैं, काइंड होते हैं, इतने गोल्डन हार्टेड होते हैं, तो दूर बैठे भी हिमालयस में भी अपने आप को किसी भी फॉर्म में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिर लास्टली हमने डॉक्टर बैलेंटाइन के बारे में भी पढ़ा कि थ्रू हिज स्टोरी वी लर्न दैट
कई ऐसे लोग होते हैं, imposters. They learn few tricks and they want to enamor people and they want to trap them just because of money. तो ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए, because it's not a big deal, if somebody is telling you your future or about your present, your family, whatever. तो ये चीजें तो ना भी कोई बताए तो हमें तो पता ही है ना कि हाँ ये है. And why to know, we should not be so this thing to know about the future. What will happen in the grace of master. तो उसके बारे में इतना हमें we don't have to get really really enamored in these things. तो कल हमने ये पढ़ा. और मुझे संगत जी मुझसे थोड़ी गलतियां हो जाएंगी, मुझे क्षमा करना, because I'm so used to of speaking through my phone, but as I'm somewhere else, so I don't know, something happened, my phone's not working, so I'm doing through my daughter's phone. It just happened at the 11th hour, so please 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 forgive me. और उसके बाद जो आज हम शुरू करेंगे, it's like healing power. अब स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं, the power of self-healing is buried in the tomb of every human life. By uncovering the potentials of that power, one can heal oneself. कहते अगर आप अपनी पोटेंशियल्स को अनकवर कर दो ना, आपको ईश्वर ने वो ताकत दी है कि आप अपने आप को हील कर सकते हैं. ऑब्वियसली गुरु जी की ग्रेस चाहिए. कहते a completely selfless man of God can heal anyone. कहते जो selfless man है ना ईश्वर का, वो किसी को भी हील कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनमें ऐसी शक्ति डाली है. The highest of all healings is to attain freedom from all miseries. कहते सबसे बड़ी हीलिंग क्या है? जब आपको इस मिजरी से छुटकारा मिल जाए. तो हमें कभी भी हम लाइफ में ऐसे दौर पे पहुंच जाए ना मुश्किलों में, हमें हीलिंग ही मांगनी चाहिए हिमालयन मास्टर से, अपने पूर्वजों से, इंसेस्टर्स से. वो हमने सीखा स्पिरिट वर्ल्ड से कि हमें उनको एक्नॉलेज करना है, हमें उनकी दुआएं चाहिए, and they can really heal us. And everybody is given the spirit guide, since when you take birth, every spirit guide is with you, so we should ask for healing. और हमारे लिए तो हम इतने fortunate हैं, Guru ji heals us through langar prasad, through chai prasad, through gurbani. तो गुरु जी से हमेशा हम हीलिंग ही मांगते हैं, परमात्मा हमें हील कीजिए, because we really need a healing in this testing times. उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज का हम पढ़ेंगे, माय फर्स्ट एक्सपोजर टू द पावर ऑफ हीलिंग. स्वामी जी कहते हैं, जब मैं 12 साल का था, when I was 12 years of age, I was traveling by foot with my master through the plains of India. We stopped at a railway station at Etah, where my master went to the station master and said, my child is with me and is hungry. उनके मास्टर स्टेशन मास्टर के पास गए और कहने लगे, मेरा बच्चा ये भूखा है, क्योंकि स्वामी जी को तो उन्होंने बच्चे की तरह ही पाला है. कहते, please give me some food. The station master went to his home for food, but when he arrived, his wife cried, you know that our only son is suffering from smallpox. How can you be so concerned about giving food to these wandering sadhus? My son is dying. Get out of this house. I'm in distress. तो स्टेशन मास्टर्स की वाइफ, जो उनकी वाइफ थी ना, she was really really upset. She got upset because and she got annoyed जब स्टेशन मास्टर जी ने खाने की मांग की, because उनके बेटे ठीक नहीं थे, वो स्मॉल पॉक्स से इन्फ्लिक्टेड थे, and she was like, oh, my son is dying. So she just reprimanded her husband, just get out of the house, get out of my sight, I want to see you anymore, because I am in distress, I am in pain. तो उन्होंने क्या किया, स्टेशन मास्टर जी बेचारे मुंह लटका के आ गए. He returned with a long face and apologized. कहते, what can I do? My wife says, if he's a real Swami, why doesn't he realize our situation and cure our child? क्योंकि हमेशा से होता है, जब हम स्वामी जी किसी को देखते हैं, हमें लगता है कि यही हमारे दुखों से हमें दुखों से बाहर निकालेंगे, उसका हमें जो भी है छुटकारा देंगे दुखों से. कहते, doesn't he have any sense? Our only child is on his deathbed and he's worried about a food offering. कहते, my master smiled and told me to follow him. We went to the station master's home. It was a challenge, and he always enjoyed being challenged. कहते, उनके जो मास्टर्स हैं ना, जब भी कोई लाइफ में challenges आ जाते थे, तो उनको तो अच्छा लगता था
कि challenges आए तो मैं कैसे challenges को overcome करूं या किस तरह से उसको पार करूं. कहते but I complained, I'm hungry. What are we going to eat? He said, you will have to wait. So Swamiji was quite famished and peckish and he wanted to, eat food. But unke master कहते हैं, okay. Then he said, okay, there was a frequent complaint of mine. Often I used to cry. You don't give me food in time. I would run away weeping. तो स्वामी जी अक्सर grumble करते रहते थे कि मुझे आप खाना time पे नहीं देते. तो स्वामी जी, started sobbing, started crying. पर उनके master उनको क्या सिखाना चाहते थे? Patience, sabr. कहते, but he was teaching me to have patience. He said, you are disturbed right now. We wait for 5 minutes and you won't be disturbed at all. In this situation, it is a right to wait. It is right to wait. But I continued to complain and the women wanted to chase me from her house. It was for the first time I had seen someone suffering from smallpox. तो स्वामी जी ने पहली बारी देखा कि जैसे smallpox क्या होता है. The boy had big abscesses all over his body, even on his face, and pus was issuing from them. तो उसके पूरे शरीर में से किस तरह से pus ooze out कर रही थी. कहते, my master said to the parents, don't worry, in 2 minutes your son will be completely well. He took a glass of water and walked around the cot on which the boy was lying. He did this 3 times and then drank the water. Then he looked at the woman and said, he's getting well, don't you see? तो मास्टर थे तो उनके तो वैसे ही बंगाली बाबा जी उनके मास्टर इतने पहुंचे हुए थे. उन्होंने जल लिया, ग्लास में जल लिया और उसके जो कॉट है जहां पर वो लेटे थे उनके बेटे, उसके आसपास चक्कर लगाए. 3 बार उन्होंने चक्कर लगाए, परिक्रमा की और वो पानी पी लिया. और उन्होंने पहले ही उस औरत को बोल दिया कि डोंट वरी, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा. कहते, to our amazement, the abscesses began to disappear from the boy, but to my dismay, at the same time, they began to appear on my master's face. तो देखिए उनके मास्टर जी ने उसके बेटे के कर्म अपने ऊपर ले लिए, पहले ही बता दिया कि भी ये ठीक हो जाएगा. कहते, every action has a reaction. अब जो उसका वो शरीर में जो भी उनको स्मॉल पॉक्स है वो कहीं तो जाना था ना, तो मास्टर ने अपने ऊपर ले लिया, उनके शरीर पे सब आ गया, उनके चेहरे पर आ गया. तो स्वामी जी ये देख के he got terrified and he was terrified and he started to cry. Then उनके मास्टर calmly कहते हैं उनको, don't worry, nothing will happen to me. Within 2 minutes, the child's face was perfectly clear and we left the house. Swami ji कहते हैं, followed my master until he came to a banyan tree. He sat under the tree and soon the abscesses began to disappear from him and then to appear on the tree. तो वो देखिए किस तरह से क्या होता है. मास्टर कहते चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा. जो भी उनके चेहरे पे जो भी स्मॉल पॉक्स के पास और जो भी एब्सेसेस थे ना, वो डिसअपियर होने लगे और उसके बाद वो एक पेड़ पर आने लगे. कहते आफ्टर 10 minutes they also disappeared from the tree. तो ट्री से भी हट के गायब हो गए. When I saw that my master was all right, he was right, I hugged him and wept. Swamiji just embraced him and started crying because Swamiji, he just took his master as his father, so he couldn't see that pain, he couldn't see it anymore, so he started sobbing. So Swamiji कहते, don't do that again, I pleaded. You didn't look nice, and it frightened me. Then many people started searching for us. I asked, have we done anything bad? Uske baad he said, no, come with me. He held my hand and we started walking again on a bank of the Jamuna River. Finally, we stopped at another house and we were given some food. We then went to an enclosed courtyard where no one would find us, took our meal and rested. The sages find pleasure in suffering to help others. तो देखिए हमें कैसे बताते, कैसे जो सेजेस होते हैं ना, उनको किस तरह आनंद आता है जो सफरिंग करते हैं उनकी मदद करने में, क्योंकि सेजेस का तो जन्म ही इसलिए होता है दूसरों के कल्याण करने के लिए. So this is beyond the conception of the ordinary mind. Human history has provided many instances of spiritual leaders who suffered for others. Such sages become examples, and many people even today follow in the footsteps of such great people. When individual consciousness expands itself to cosmic consciousness, it becomes easy to feel delight in the suffering for the sake of others. कहते जो आपकी अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है ना, जब इतनी एक्सपैंड हो जाती है, बढ़ जाती है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाती है, तो फिर आप इस चीज को आप इसको बहुत प्राइड से और डिलाइट से लेते हैं, क्योंकि आप
फिर दूसरों के लिए जीते हैं। आप सफरिंग अपनी नहीं सफरिंग आप करते, आप दूसरों के लिए, you suffer because of the sake of others, for humanity, for mankind. कहते for them it's not suffering. Though the ordinary people think that they are suffering, when one's consciousness remains limited to the individual boundaries only, then the individual suffers. A great man does not suffer when something happens to his own self, but feels more pain in the suffering of others. फिर उनकी सफरिंग अपनी नहीं रहती, वो सफर क्यों करते हैं? दूसरों की सफरिंग देख के, जितने भी दुनिया में इतने दुख हैं वो उसको देख के दे सफर अलॉट। कहते pain and pleasure are a pair, sorry. Pain and pleasure are a pair of opposites experienced when the senses contact objects of the world. Those whose consciousness has expanded beyond the sensory level get freedom from this pair of opposites. They are techniques for voluntarily withdrawing the mind from the senses and focusing inwards to reveal the center of consciousness. In such a state of mind, one is not affected by sensory pleasure or pain. Such a one-pointed mind also creates a dynamic will which can be used for healing others. All such healing powers flow through the human being from one source of consciousness. The moment the healer becomes conscious of his individuality, that spontaneous flow of healing power stops. Healing is a natural power in man. The healing of others is possible through that willpower, which is not interrupted by the lower mind. देखो इसमें क्या सीखा है? तो ये चीज सीखा है कि सेजिस अगर पहले बोल देते हैं ना, जो सच्चे सेंट होते हैं कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, तो कहते हैं ना उनकी बात बिल्कुल इतनी मायने रखती है, जो कहते हैं वह होता है। पहले मतलब जो चीज होने वाली हो पहले ही बता देते हैं। इस तरह से उनके मास्टर ने भी बता दिया कि डोंट वरी, वो लड़का ठीक हो जाएगा। और दूसरी चीज हमने सीखी कैसे उनके मास्टर ने उस पॉल बॉक्स के जो भी थे वो सब अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर लेके फिर वो ट्री पे ट्रांसफर हो गए, ट्री से भी गायब हो गया। ये उन मास्टर की ग्रेस से ही हुआ है। तीसरी चीज हमने ये सीखी है कि यस, ये जो हमारी सफरिंग तो हमारी तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हमारी तक है ना, हम सिर्फ अपनी सफरिंग का सोचते हैं। पर जो सेजिस हैं, जब वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में मर्ज, उनकी कॉन्शियसनेस मर्ज हो जाती है, दे सफर इन द सफरिंग्स ऑफ अदर्स। वो फिर दुनिया की सफरिंग देख के इतने सफर करते हैं, और क्योंकि ये उनका सेल्फलेस प्यार होता है। एंड देन वी नो हमारे गुरुजी कितनों की, पूरी सृष्टि की सफरिंग अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि जितने भी हम सत्संग सुनते हैं कितनों की सफरिंग उन्होंने अपने ऊपर ली है। बिकॉज सबसे ऊपर है गुरुजी, सबसे ऊपर। और there is, I mean, we can't describe the way Guruji, takes sufferings on himself, because जब मैं गुरुजी के कमरे के बाहर बैठी थी तो मैं हमेशा कभी ऐसे मौके दिए गुरुजी ने कि उनकी सफरिंग की, ये तो देखो वो चंद पल दिए होंगे और कितना गुरुजी सफर करते होंगे। इतनी आवाजें गुरुजी की हाय हाय की आती थी। He would clench his teeth, he would clench his feet. इतनी खुशी मतलब मैं क्या, इतने प्यार में अपने भक्तों की सफरिंग लेते थे और अभी भी ले रहे हैं। सो ये है गुरुजी का प्यार सबके लिए, कि गुरुजी पता नहीं जाने अनजाने में कर्म हमसे हुए, पर सफरिंग आप लेते हैं। दैट्स योर लव। और हम बस यही चाहते हैं कि संगत जी हम कोई भी नए कर्म ना ऐसे बनाए। पिछले जन्मों के कर्म तो वी आर नॉट अवेयर, बट he has given us awareness of this janam, so we should tread on this path very very carefully. We should not accumulate new karmas, because it's going to become very very difficult for him to take all the sufferings. हमें उनका भार थोड़ा कम करना चाहिए कि ठीक है गुरुजी, पुराने जन्मों के गुनाहों को माफ कीजिए, but now that we are aware, और जो आपकी बड़ी सीख है अच्छा इंसान बनना है, उसी पे हमने रिफ्लेक्ट करना है रोज। Okay, next chapter is my master sends me to heal someone. उनके मास्टर उनको as it suggests कि उनके मास्टर ने उनको भेजा होगा किसी को हील करने को। कहते one fine morning my master and I were sitting outside our cave when suddenly he said, उन्होंने suddenly क्या बोला? You have to catch a bus. The bus route is 7 miles from here, so hurry up. He often told me to get up and go somewhere on the spur of the moment. तो मास्टर्स की मौज ऐसी होती है, पहले कुछ नहीं बताते, 11th hour पे उनकी चीजें होती, जैसे उनको लगता है कुछ ऐसे होने वाला या किसी का कल्याण करवाना है, तो वो कहते उसी वक्त बताते थे, पहले नहीं बताते थे, on the spur of the moment. Sometimes I wouldn't know why, but I would find out when I reached there. I rose and picked up the pot of water I always carried. He said, take the bus to Haridwar railway station. You'll get a ticket and from there go to Kanpur.
कहते डॉक्टर मित्रा इज बेड रिडन, कोई शायद हो सकते हैं उनके मास्टर के भगत हों या डिसाइपल हों, कहते डॉक्टर मित्रा इज बेड रिडन एंड इज कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग मी। तो उनके मास्टर को देखो, जब भी कोई भगत याद करता है तो कहीं भी मास्टर बैठे हों, कहीं भी बैठे, उनको पता होता है मेरा भगत मुझे याद कर रहा है। कहते इज हैविंग अ ब्रेन हेमरेज एंड इज ब्लीडिंग आउट ऑफ his right nostril, but his wife will not allow him to go to the hospital. कहते उसकी इतनी बुरी हालत है, ब्रेन हेमरेज हो गए, नाक से खून निकल रहा है, पर उसकी जो वाइफ है हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं मानेगी। कहते his brother-in-law Dr. Basu knows it is a hemorrhage, but there are no facilities there to perform brain surgery. तो कहते see how helpless they are. brother-in-law को पता है hemorrhage है, पर जिस स्थान पर वो रहते हैं वहां ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं है कि कोई उन पे ब्रेन सर्जरी परफॉर्म कर सके। आई आस्क्ड व्हाट शैल आई डू। तो मास्टर जी कहते हैं उनके बंगाली बाबा जी, जस्ट गिव हिम अ लव पैट ऑन द चीक। कहते प्यार से ना एक लव पैट, थोड़ा सा बस पैट कर देना चीक पे। डोंट कंसिडर योरसेल्फ अ हीलर। कहते अब ये मत सोचना कि तुम कुछ करने वाले हो, बिकॉज यू गोना बी जस्ट माई इंस्ट्रूमेंट। थिंक दैट यू आर एन इंस्ट्रूमेंट एंड गो देयर, फॉर आई हैव प्रॉमिस्ड हिम and his wife that we will always help them. Go as quickly as you can. तो मास्टर कहते हैं rush, जब जाओगे just give him a sweet and light love pat on the cheek. But कुछ भी हो, तुम सिर्फ मेरे माध्यम बन के जा रहे हो। I said, I'm surprised to find that you make promises on my behalf without my knowledge. तो हमें शुरू से पता स्वामी रामाज इज वेरी ब्लेटेंट। वो सोचते नहीं बोलने से पहले, जो उनके मन में आता है वो अपने मास्टर को बोल देते हैं। कहते प्रॉमिसेस आप करते हो मेरे, और मैं आपके बिहाफ पे जाऊं और मुझे कुछ तो पता ही नहीं होता। I was reluctant to go on such a long journey, but I could not disobey. I went to the bus route, which was 7 miles away from the cave, and stood by the side of the road until the bus for Rishikesh Haridwar picked me up. The drivers would always give a Swami ride when they saw on the roadside. तो drivers जो भी होते थे, जब भी कोई ऐसे स्वामी जी कोई रोप में होते थे, तो दया करके, or as a matter of respect, they would just give them a ride. कहते I got off the bus at the railway station at Haridwar with no money. So Swamiji looks broke. He didn't have money at that time. He just goes without money, penniless. I had only half an hour until the train was to leave for Kanpur. I looked at my watch and thought I might be able to sell it to buy a ticket. So Swami ji कहते दिमाग में आया कि चलो मैं अपनी घड़ी बेच दूंगा टिकट लेने के लिए. Approaching a gentleman at the railway station, I asked if I could exchange my watch with him for the money to buy a ticket. Surprisingly, he said, my son could not come with me, so I have an extra ticket. Please take it. I don't need your watch. तो देखो ये स्वामी जी के मास्टर की ग्रेस से हुआ था. जैसे उन्होंने कहा ना कि कोई बात नहीं, तुम्हें वहां पर जाके ना you'll get a ticket and from there to कानपुर, जो भी है उनके मास्टर की वजह से हुआ. देखो रीजंस बन जाते हैं जो उनको मिले. इन्होंने कहा सोचा था मैं अपनी घड़ी बेच दूंगा, पर जो इनको जेंटलमैन मिले उन्होंने बोला नहीं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है, मेरा बेटा जा नहीं सका, so you could take it, and I don't need your watch. I got into the train, Swamiji कहते, I got into the train and met a lady who was also going to Kanpur and who was a close relative of Dr. Mitra. She had heard about me and my master from Dr. Mitra and his wife, and she gave me something to eat. We traveled all night, and in the morning the train arrived at Kanpur. There was so much rush at the railway station that it took me 10 minutes to get through the gate. Outside the station, I suddenly met a man who knew me well. He had his car parked nearby and had been waiting for someone, but the person never turned up. तो स्वामी जी कहते हैं I suddenly met a man, जो मुझे जानता था, उसने अपनी कार पार्क लगाई हुई थी और वो भी किसी की वेट कर रहा था, पर वो बंदा नहीं आया. तो he had missed his train to Delhi. So this man wanted to drive me to his house, but I insisted that we go to Dr. Mitra's instead. तो उनकी मास्टर्स की ग्रेस से सारे बड़ी स्मूथली अरेंजमेंट होते गए. तो ऐसे ही होता है जब हम कहते हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसे हुआ फिर ऐसे होने लगा. ये सब गुरुजी की ग्रेस के साथ होता है. गुरुजी कैसे हमारे रास्ते स्मूथ कर देते हैं. When we reached there, I knocked on the door and entered to find 3 doctors examining Dr. Mitra. Mrs. Mitra was delighted to see me and said, now that you have come, I hand over my husband to you. उनको देख के उनकी wife, she just literally heaved a sigh. उसको चैन आ गया. कहती बस अब मेरे हस्बैंड, बस आपने ही देखना है सब कुछ. तो स्वामी जी कहते दिस इज कॉल्ड इंडियन ब्लाइंड फेथ इन साधुस, क्योंकि जो इंडियंस हैं
वो ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं, उनको पूरा मतलब देखते सारी सरेंडर कर देते हैं। कहते आई सेड आई एम नॉट अ हीलर, I've just come to see him. I went over to Dr. Mitra's bed, but he was not allowed to sit up because of the bleeding from his nostril. When he saw me, he asked, "How is my master?" I gave him the gentle pat on his right cheek. जैसे कि बंगाली बाबा जी ने बोला था ना, उसके चीक पे gentle सा sweet सा pat कर देना। कहते I gave him a gentle pat on his right cheek. तो कहते देखिए उसका असर क्या हुआ। After a few minutes, there was no more bleeding. One of the doctors explained that the slap which I had given him on the cheek closed the opening in the blood vessel and that it was now sealed. तो देखिए वो जो जेंटल पैट, क्योंकि स्वामी जी को तो मीडियम चुना ना उनके मास्टर ने, तो जैसे ही उन्होंने किया तो देखो वो जो ब्लड वेसल जो भी था वो सील हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। I did not know what I had done, but I followed my master's instructions. Dr. Mitra's sudden recovery quickly became the talk of the town, and hundreds of patients started searching for me. So I left the city later that day and reached Haridwar the next morning. जैसे ही उनकी ऐसी सुन के ख्याति बढ़ने लगी, तो पर स्वामी जी को तो फिर वहां से जाना ही था। कहते from there, I went to the place where my master was staying. I told my master teasingly, I know the secret and can stop a hemorrhage in anyone. स्वामी जी कहते अब मुझे पता लग गया सीक्रेट, अब मैं किसी का भी हेमरेज अपने आप ठीक कर सकता हूँ। तो उनके मास्टर खिलखिला के हंसने लगे। कहते he laughed at me and said, "Hey, the doctor who gave you that explanation is quite ignorant, okay? There are various modes and levels of suffering, but ignorance is the mother of all." कहते on several occasions, I had to leave suddenly according to my master's instructions without having any knowledge of my purpose and destination. तो इस तरह उनको बहुत बारी अपने मास्टर्स की इंस्ट्रक्शन फॉलो करके कहीं भी जाना पड़ जाता था। कहते I had many experiences like this. I came to the conclusion that the ways of the sages are mysterious and beyond the ability of ordinary minds to understand. ये तो हमें पहले भी हमने बहुत बड़ी पढ़ा है कि जो सेजेस के तरीके हैं ना, उसको हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, बहुत मिस्टीरियस होते हैं। कहते हैं I would just do and then experience. Experience would give me knowledge. One who is free from the conditionings of the mind knows past, present and future alike. कहते जो माइंड की कंडीशनिंग से परे है ना, बियॉन्ड है, उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक जैसे ही लगते हैं। कहते these conditionings are called time, space and causation. The ordinary mind cannot fathom these conditionings, but the great men do. It becomes difficult for ordinary men to understand this science, but it does not take extraordinary ability for those who are on the path. कहते मैंने एक बारी अपने मास्टर से पूछा, is it possible for a man in the world to get freedom from all conditionings of the mind, or does he have to live in the Himalayas his whole life to develop powers such as yours? कहते क्या एक इंसान ऐसी कंडीशनिंग्स ऑफ माइंड से क्या वो छुटकारा पा सकता है, फ्रीडम पा सकता है, कि उसको हिमालय पे ही रहना पड़ेगा जानने के लिए? तो उनके मास्टर क्या जवाब देते हैं? कहते हैं if a human beings remain constantly aware of the purpose of his life, एक तो आपको पर्पस ऑफ लाइफ जानना है क्या है ना, आप में अवेयरनेस है उस चीज की। कहते and directs all his actions toward the fulfillment of that purpose, और फिर वो अपने एक्शंस अपने कर्म है ना उस जो पर्पस है उसका उसकी तरफ लगा देना। कहते there remains nothing, फिर there remains nothing impossible for him, फिर कुछ भी impossible नहीं रहता। कहते those who are not aware of the purpose of life, और जिनको पता ही नहीं भी मेरी लाइफ का पर्पस क्या, अपनी दुनिया में ही जी रहे हैं, वो सोच रहे चलो यही है हमारी जिंदगी, तो वो फिर वर्लपुल ऑफ मिजरीज में और घूमते रहते हैं। कहते इट इज अ लॉ दैट वन कैनॉट लिव विदाउट डूइंग हिज ड्यूटीज, वो तो है, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट ड्यूटीज मेक the doer a slave, बिल्कुल। कहते if the duties are performed skillfully and selflessly, then the desires do not bind the doer. कहते देखो कर्मों को तो है ना, सबको ड्यूटीज तो करनी है, पर आप बस इन ड्यूटीज को लेके उसके गुलाम ना बने, उसको ऐसी उसको स्किलफुली करें, ऐसा सेल्फलेसली करेंगे ना, तो आप फिर बंधेंगे नहीं ड्यूटी से। you just become like an observer, then you do the duties and the duties do not bind the doer, फिर आप बंद नहीं जाते उसमें। कहते all actions and duties performed with love become means in the path of liberation. ये तो है, आप कोई भी काम करें उस ड्यूटी को अगर आप
प्यार से करेंगे ना, आप सोचेंगे ये मेरा हर काम सिर्फ बाहर संगत में सेवा सेवा ही नहीं होती, घर में भी चाहे चाहे इवन इफ वी आर डूइंग द डिशेस, वी आर डूइंग द लॉन्ड्री, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, हम कुछ भी करें, हम ये सोचे ना कि हम ये गुरु जी की सेवा के लिए कर रहे हैं, देन दैट ड्यूटी डजंट stay as a duty. I think it becomes love because you're doing everything with love. So वो आपको ना, it takes you to the path of liberation. कहते performing one's duty is very important, but more important is love, without which duty creates bondage. Fortunate is he who serves others selflessly and learn to cross the mire of delusion. वो तो है, जब किसी की सेवा आप selflessly करते हो ना, वो सबसे बड़ी चीज है. कहते human being is fully equipped with all the necessary healing powers, but does not know their usage. हर इंसान में healing power है, पर वो उस अपनी क्षमता को नहीं जानता. कहते the moment he comes into touch with the healing potentials within, he can heal himself. All the powers belong to only one God. A human being is only an instrument. हमने बहुत बारी देखा है, सत्संग सुनते हैं, कई बारी गुरु जी कल्याण करने के लिए अपनी संगत को भी किसी के भेज देते हैं, और हम सुनाते हैं संगत के आने से ये हुआ वो हुआ, जबकि वो पावर, वो एनर्जी किसकी फ्लो करती है? गुरु जी की. वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और एक पल भी ये नहीं दिमाग में आना चाहिए कि मैं करता हूं. हम नहीं है करता, वी नॉट द डूअर्स. गुरु जी इज द डूअर. क्योंकि गुरु जी अपने भगत की कई बारी महिमा दिलवाने के लिए, या उनके किसी को भी चूज कर सकते हैं, उनके वेज बहुत डिफरेंट है, तो कोई भी जरिया बनाते हैं गुरु जी. हमने of course उस जरिए की रिस्पेक्ट करनी है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट द डूअर ऑफ द डूअर्स इज अस, गुरु जी. और किसी में उस बात का अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि नहीं मेरे कारण हुआ ये, मैंने ऐसे किया, मैं वाली तो बात आनी ही नहीं चाहिए. देखो बहुत बारी होता है हमारे गुरु जी की इतनी एनर्जी फ्लो करती है उस माध्यम में, तो कई बारी होता है हम उस माध्यम की पूजा करने लग जाते हैं. वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए. करने कराने वाले कौन है? गुरु जी हैं. सब कुछ गुरु जी हैं. क्योंकि आज अगर हम बैठे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं. सुनने वाले भी माध्यम है, बोलने वाले भी माध्यम, कुछ भी नहीं है. ये सब कुछ गुरु जी कराने वाले हैं. सो गुरु जी इज द डूअर. तो बहुत बारी कल्याण करने के लिए गुरु जी भी संगत को भेजते हैं. कई बारी संगत के हाथ में इतना हीलिंग टच दे देते हैं, तो हम ये ना सोचे हम उस संगत को गुरु ना बना के बैठे, जो कि आजकल बहुत होता भी है. वी आर नॉट गोइंग टू इनेमर बाय समवन, लेट्स नॉट गेट इनेमर. और हाँ ठीक है, हमें प्यार हर एक के साथ रखना चाहिए, और हर एक के साथ रिस्पेक्टफुली रहना चाहिए. बट गुरु जी की एनर्जी इतनी पावरफुल है, वो फ्लो करने लगती है. क्योंकि गुरु जी कहते, जैसे मैंने किसी को सुना, कोई बैठे थे दिल्ली सॉरी एम्पायर स्टेट में, कि हाँ जी गुरु जी देखो मैं इन्ने घंटे गड्डी चलाई, मैंने तो कुछ नहीं होया. मतलब ही वाज टेकिंग ऑल द क्रेडिट कि नहीं मेरी ड्राइविंग ये वो, मैंने तो कुछ. गुरु जी कहते हैं इतना थोड़ी, तो मेरी ब्लेसिंग चल रही है ना नाल. तो यही तो है. हम कई बार सोचते हैं ना, हम तो खुद कहते हैं कि गुरुजी तो आपकी एनर्जी है, कौन है, हम बोल ही नहीं सकते ऐसे. तो योर ट्रेमेंडस एनर्जी keeps on flowing गुरुजी. हम तो सिर्फ, मैं तो कहूंगी गुरुजी माध्यम कहना भी बहुत बड़ी बात है, हम तो माध्यम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. यू आर एवरीथिंग एंड यू आर मेकिंग अस एवरीथिंग, यू आर मेकिंग अस डू एवरीथिंग. ओके, नेक्स्ट है unorthodox ways of healing. Swami Ramaji कहते हैं, the belief in possession is as old as the oldest cultures. We still hear that such and such person is possessed by demon or ghost or spirit. कहते from 1960 to the present, in my extensive travels all over the world, I have found that not only ignorant people but also educated priests believe in the reality of possession. कहते but this possession is just a mental imbalance. अभी ये मुझे पता नहीं कि ये किस कह रहे हैं कि शायद मेंटल इम्बैलेंस होता है कईयों को, बट मैं बिलीव करती हूँ पोजेशन में कि यस समटाइम्स सम पीपल गेट पोजेस्ड. आई डोंट नो अभी इसमें आगे क्या आएगा. इट्स बीन एजेस सिंस आई रेड दिस बुक. उसके बारे में चलो मैं थोड़ा सा बताऊंगी. कहते मैं दोबारा से पढ़ती हूँ. कहते the belief in possession is as old as the oldest cultures. We still hear that such and such person is possessed by a demon or ghost or spirit. From 1960 to the present, in my extensive travels all over the world, I have found that not only ignorant people but also educated priests believe that in reality of
possession. तो स्वामी जी कहते हैं ये नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ लोग ही या जिनको कोई ज्ञान नहीं है, एजुकेटेड लोग भी possession के बारे में मानते हैं. तो स्वामी जी कहते हैं but this possession is just a mental imbalance. It's possible to treat such cases with religious rituals and ceremonies. कहते हैं हाँ, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं कोई रिचुअल्स करके, रिलीजियस और सेरेमनीज करके. कहते हैं in most communities of the world such rituals are still practiced, though sometimes clandestinely, जैसे secretly या surreptitiously करते हैं. कहते हैं in most of the cases which I had an opportunity to examine, the problem was hysteria. हो सकता है कईयों में psychological problem भी हो. कहते हैं usually created by a repression of sexual urges. कहते हैं there are other causes such as pathological fear of losing something or of not being able to obtain something that is desperately desired. Yeah, this is one of the reasons, कई बारी किसी की sexual urges repressed हो, या फिर कई लोग इतने fear में जीते हो, कोई चीज ना मिलने का डर, कोई चीज खोने का डर, उसमें imbalance होना वो तो जायज है. कहते there are certain places of India where patients are brought to be freed from possession. The therapies use crude methods. तो कई बारी जो possessed होती हैं bodies, तो कहते therapies इतने crude और brute methods use करते हैं, including whipping the patient before an idol. During the treatment, one of the therapists called a vakya. जब ट्रीटमेंट करते हैं ना, कई बार किसी को विप्ड भी किया जाता है, तो जोर जोर से मारा जाता है. कहते हैं उस टाइम वो एक वाक्य बोलते हैं. वाक्य comes forward as though he were also possessed, but by deva, गुड स्पिरिट. तो वो जो वाक्य बोलते हैं ना, जैसे हम कहते हैं किसी में पहरा आ गया, तो वो कहते हैं ऐसे लगता है जैसे ना उनको भी पोजेस किया हो, पर गुड स्पिरिट है. कहते समटाइम्स व्हाइल इन हाईली कंसंट्रेटेड स्टेट ऑफ इमोशन, कहते हैं the वाक्य jumps into the flames of a fire to prove how mighty his powers are. तो मतलब कई बारी जो वाक्य वो बोलते हैं ना, कई बारी ऐसा लगता है, कहते जब वो पूरी अपनी हाईली कंसंट्रेटेड स्टेट ऑफ इमोशन में होता है ना, तो ऐसा है कि वो चीज जंप करके ना फ्लेम ऑफ फायर्स में चली गई है, और वो दिखाते हैं कि भी हाँ हम कितने शक्तिशाली हैं. कहते हैं then chanting hymns he tried to aid the patient out of his condition. कुछ अपने मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और पेशेंट को हील करते हैं. कहते there are many such practitioners scattered through the Himalayan mountains. कहते इस तरह तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे हिमालयन माउंटेन्स में. कहते a few years ago Dr. Alice Green and some of the colleagues from the Manicure Foundation came to India with sensitive psychological instruments to examine yogis. अच्छा, वो फिर अपने psychological instruments ले आए ना कि yogis पे थोड़ा जो भी experiment करने को. कहते they visited my ashram situated on a bank of the Ganges at Rishikesh. They arrived a year later than originally planned, however, and could not contact the yogis who had agreed to come to the ashram for the experiments. पर कई yogis ना माने नहीं कि हमने we don't want to get into these kind of things, experiments and all that. कहते I had appointed a man named Hari Singh to serve as a watchman, and he offered himself as a subject. तो स्वामी जी ने एक ऐसे हरि सिंह थे ना, वो वॉचमैन थे, उसको पॉइंट कर लिया भी तू सब्जेक्ट बन जाए इनके एक्सपेरिमेंट्स का. कहते there were 40 American observers, including doctors and psychologists, who were staying in my ashram at that time. तो इस तरह से 40 अमेरिकन ऑब्जर्वर्स, जिसमें डॉक्टर्स भी थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे, सब आ गए. तो स्वामी जी के साथ रहने लगे आश्रम में. कहते a movie maker from the United States who had accompanied Dr. Green's party started his camera. तो उसने एक मूवी मेकर था ना अमेरिका से, उसने अपना कैमरा स्टार्ट कर दिया. His camera as Hari Singh put a steel blade in a fire. कहते when it became red hot, Hari Singh pulled it from the fire and licked it with his tongue. तो हरि सिंह ने तो अपना वो फीट्स दिखानी शुरू कर दी भाई. वो जैसे ही जो स्टील का ब्लेड था ना आग में डाला, तो उसने he pulled it from fire and उन्होंने वो अपनी टंग के साथ, जीभ के साथ लिक करना शुरू कर दिया. कहते there was a hissing sound and vapor arose but nothing happened to his tongue. तो देखिए इतनी गर्म चीज के बावजूद भी उनकी टंग जली नहीं, कुछ नहीं हुआ. कहते it was not burned or scarred in any way. Such phenomena are often performed by non-yogis and people then consider them to be yogis. कहते कई बारी ना ऐसे phenomena non-yogis वाले भी कर लेते हैं, तो लोग सोचते हैं अच्छा ये तो बहुत पहुंचा हुआ योगी है. कहते out of curiosity Westerners frequently go to India and to the Himalayas foothills to find such people. तो वेस्टर्न लोग तो वैसे ही है ना, बड़े एनामर हो जाते हैं चीजें देख के, तो वो फिर जाते हैं हिमालयाज में कि चलो रिकॉर्डिंग करते हैं, देखते हैं ये लोग कैसे करते हैं. कहते the phenomena are common enough and genuine but they are not part of yoga and are not taught in the yoga schools. कहते इस तरह के जो फिनोमिनाज है ना, कई बार देखे हमने देखे हैं, लोग गर्म पानी पे भी चलते हैं या लोग गर्म कोयले पे भी चलते हैं. जैसे इन्होंने आग में अपना वो डाल दिया तब भी कुछ नहीं हुआ टंग को. तो कहते हैं ये कोई योगा की क्रिया नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ना ही ये सिखाई जाती है योगा स्कूल्स में.
Swami ji कहते हैं, once in 1945, a neurologist from Australia came to see me at my mountain home and stayed with me for 10 days. There were few hospitals or dispensaries in the mountains 30 years ago. Although the Indian government is now trying to build treatment centers here and there to treat minor health complications, I'd hope that this man could help the villages by prescribe a few medicines. तो जो neurologist आए ना ऑस्ट्रेलिया से, तो 10 दिन रहे उनके साथ, तो स्वामी जी ने सोचा चलो ये कुछ मदद तो कर सकता है ना विलेजेस की, कोई मेडिसिन वगैरह लिख के. कहते his reason for coming to the Himalayas to see me was to find a way to get rid of his severe, हालांकि वो किस लिए आया था, to get rid of his severe chronic headaches which prevented him from leading a normal life. तो उसका जो बहुत पुराना जो भी सर दर्द था ना, उसे छुटकारा पाने के लिए आया था स्वामी जी के पास. कहते although he was a doctor himself and had been examined by many other doctors, he could not find the cause of the headaches and no one had been able to successfully treat him. तो देखिए, हाँ, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, खुद डॉक्टर थे पर फिर भी अपनी बीमारी से निजात नहीं पा पाए. मतलब उनको पता नहीं था मेरा सर दर्द क्या हो रहा है, what's the reason. कहते an old woman who used to bring milk to my cabin smiled when she saw him and said, is he a doctor? She laughed and said to me, if I'm permitted, I can remove his headache in 2 minutes time. तो वो कहती है, आप मुझे इजाजत देना स्वामी जी, I can heal him, I can make him get rid of the headache, I can do it in a jiffy. कहते I said, तुम स्वामी जी कहते हाँ हाँ, please try. She brought one of the herbs, तो ऐसी कोई herb लेके आई that is well known and widely used in the mountains for making fire. तो वो herb से fire बन जाती, मतलब fire लगाने में, आग लगाने में काम आती है. कहते a spark made by friction between two rocks ignites the herb. कहते she crushed the herb and put a bit of it on the doctor's right temple and said, believe me, you will be free from headaches forever. तो देखो कितनी powerful affirmation भी बोल दी उसने साथ में. कहते lie down. When he did so, she placed an iron hook in the fire and heated the point until it was red. Then she put the red hot point on the herb which had been placed on his temple. तो इस तरह से उसने अपना जो भी क्रिया की. कहते the doctor screamed and jumped up. I was also shocked. The women calmly returned to her village and the doctor's headaches were gone. तो जो भी देखो उस women ने किया अपने हर्ब वगैरह के साथ, जिस तरह से भी प्रोसीजर से डॉक्टर का हेडेक अल्टीमेटली चला गया. कहते such treatments are often used by the villagers. The doctor said, which science is this? I want to learn more about it. I did not encourage him, for although I believe that occasionally such treatments may help, they're not systematic and it's very difficult to evaluate which ones are truly effective and which are only a matter of superstition. तो स्वामी जी कहते कि मैं इतना इन चीजों के हक में नहीं हूँ, क्योंकि क्या हो सकता है ना, कई बार एडवर्स इफेक्ट भी हो जाता है. और कहते कोई सिस्टम तो होता नहीं इन चीजों का, दे नॉट सिस्टमैटिक, और कई बार आपको पता ही नहीं है कि सच में इफेक्टिव है भी है कि नहीं है, तो कि क्या है, क्या ये सिर्फ इनका सुपरस्टिशन ही है. तो the doctor persisted though and left for the Garhwal mountains where he studied under a mountain medicine man. कहते वैद्य भैरव दत्त who knew more than 3,000 variety of herbs. तो कहते एक वैद्य भैरव दत्त थे ना, उनको 3,000 से ज्यादा herbs की varieties पता थी. कहते when the doctor met me again 6 months later, he reported, I know the explanation of that treatment which I received from the old lady. It is based on the principles which are used by travelers who went across the Tibetan border to China and which have been systematized as acupuncture. Charaka, the ancient Indian master of medicine, mentions it as Suchi Veda, Sui in modern Hindi, and the needle pricking treatment. कहते मुझे पता है इसको क्या कहा जाता है. एक needle pricking treatment होता है, acupressure से ये ठीक कर देते हैं. कहते I concluded that he had been relieved of one kind of headache, but was now creating a new headache for himself by investigating these cures. There are many things known to the villagers which work, but we would be wise not to adopt them until we really understand the underlying principles. We must keep an open mind. आगे स्वामी जी कहते हैं, herbs and medicine prepared from metals are not in common use in the West today, although we have many modern means to prepare drugs which do help patients. Drugs cannot be the remedy for all diseases. Ayurvedic treatment uses herbs and many other methods of treatment: water therapy, clay therapy, stream therapy, color therapy, sun baths, and the use of juices of various fruits, flowers, and vegetables.
are essential components of Ayurvedic therapy. हाँ, ये चीजें आजकल बहुत हो रही हैं, जितनी भी इन therapies का नाम बोला गया है. कहते हैं the Ayurvedic method of treating disease is divided into two sections, Nidana and Pathya. Therapists prescribe changes in eating, sleeping, and even climate instead of putting patients in the terrifying conditions that we often find in crowded modern hospitals. I have often wondered how it is possible for the people of the Himalayas to remain so healthy and have such longevity, though they enjoy very few of benefits of modern medicine. तो स्वामी जी बड़े हैरान है, कहते हैं ये जो हिमालयस के लोग हैं इतने हेल्दी कैसे हैं? They're so robust, so healthy. There are many diseases for which modern medical science has not discovered a remedy, but these mountaineers do not even suffer from these. Perhaps वो तो है ही, उनका खाना पानी सब कितना फ्रेश है, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई अडल्ट्रेशन नहीं होती वहां पर. कहते perhaps fresh food, fresh air, and above all free thinking with no anxiety is responsible for their health. तो वो तो है ही, एंजाइटी के कारण बहुत बहुत डिजीजेस होते हैं. वरी इज वन ऑफ द मेन इश्यूज. There are millions of patients all over the world who suffer from psychosomatic diseases can be helped through right diet, juices, relaxation, breathing, and meditation. Preventive and alternative medicine should not be ignored. तो आजकल तो वैसे ही बहुत alternative medicine का हो गया है, हर तरफ different therapies भी शुरू हुई हैं. ओके, मैं जितना आज पढ़ पाऊंगी मैं देखती हूँ. ये आई थिंक इट्स अ लॉन्ग चैप्टर. ये है हीलिंग इन अ हिमालयन श्राइन. स्वामी जी कहते हैं as part a party of businessmen and few doctors decided to visit the shrine of Badrinath in the Himalayas. तो एक businessmen के लोग और few doctors उन्होंने सोचा कि चलो हम ना इधर बद्रीनाथ को visit करते हैं in the Himalayas. Mr. Jaipuria, a prominent businessman from Kanpur, organized this pilgrimage, and Dr. Sharma went along to serve as health custodian to the 40 people in the party. उसके बाद क्या हुआ? they persisted that I go with them to teach the group. With the exception of the organizer who was carried in a palanquin, palki si जिसने पकड़ी हुई थी. We went on foot from Karnaprayag, and after several days journey reached Badrinath. By the time, since they were not used to walking on foot on the mountains, all members of the party were worn and tired and were suffering from aches and pains, especially from swollen knee joints. क्योंकि उन लोगों को थोड़ी आदत है इतना चलने की, तो उनके तो इतने पैर सूज गए, and they were so tired and worn out. बहुत थकावट हो गई उनको. Upon reaching Badrinath, everyone rushed for a bath in the hot springs. The sun was about to go to bed, and my room was in a quiet side of a very big building where there lived many travelers who had come to visit its shrine. उसके बाद स्वामी जी कहते हैं, I was in the habit of remaining awake at night and taking my rest from 1 o'clock to 3:30 in the afternoon. स्वामी जी कहते हैं मैं तो सारी रात मेरी तो समाधि में मेडिटेशन में निकल जाती थी, और मेरा सोने का टाइम क्या था? सिर्फ दोपहर के 1 से 3:30 बजे तक. कहते this habit has become a part of my life. At 2:30 in the morning, somebody knocked at my door and said, 2 बजे किसी ने उनका दरवाजा खटकाया और बोला, Swami ji, please come out. My brother is suffering from a severe heart attack and the doctors cannot handle it. Please help now. और वो कौन था? It was Mr. Jaipuria, who loves me very much. But I strictly maintained the early period of the morning for meditation. स्वामी जी को नहीं अच्छा लगता था कोई meditation में विघ्न डाले, कोई इनको तंग करे. And this distraction was a disturbance to my willpower. I also knew that there were several doctors there with oxygen and medical kits. So rather than open the door, I said from inside, we yogis and swamis aspire to die in a place like this, and it never happens. कहते तुम ये कह रहे हो ना कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है, हम लोग हमारी तो इच्छा ही है कि हम यहाँ पर ही हमारे अपने प्राण त्यागें. कहते how can it be possible for your brother to have chosen such an auspicious place to die? It's not possible. He is not dying. Go away and don't disturb me. कहते I found Jaipuria's brother quite normal in the morning. कहते this retort of mine became a joke among the businessmen. If a holy man are not fortunate enough to die in shrine like Badrinath, how it's possible for a businessman to have such a peaceful death? It's not possible. कहते कई बार इतने holy men जो होते हैं ना, उनके भाग्य में नहीं होता कि बद्रीनाथ जैसी इतनी पायस जगह पे प्राण त्यागे, तो फिर ये तो बिजनेसमैन है, इसको थोड़ी मौत यहाँ पर आ सकती है. It's not possible. कहते the next morning everyone went to the shrine and met many swamis who lived in nearby caves. Swami ji कहते at 5 o'clock
In the evening, I was informed, क्या inform उनको किया गया, by Dr. Sharma, the head physician of the party, that Mrs. Jaipura was suffering from bloody diarrhea. Because she was fine little old lady who always looked after my comforts. I used to call her mother. I felt sad and rushed to see her. तो जो मिसेस जयपुरिया थे ना, she was suffering from this diarrhea problem, तो स्वामी जी उनको बड़े प्यार से अपनी माँ बुलाते थे. कहते मैं उदास हो गया और फिर मैं उसको देखने चला गया. कहते her face was very pale and she was so completely exhausted that she could move only her lips. But because she was feeling so frail, and बिल्कुल पीले पड़ गए थे वो. कहते her two sons who were sitting next to her did not believe that the old lady was going to live. The doctor gave her medications, but nothing happened. Her breath was very shallow, and the doctor declared her case hopeless. I put my hand over her head in sympathy. I didn't know what to do. Suddenly, I turned my head and found a tall young Swami calling my name, and my attention was diverted toward him. The Swami said, "Where's the doctor?" And the doctor came forward. The Swami said, "That's all your medical science can do? You people are really killing people and drugging them? What poor knowledge." The doctor was annoyed and told him, "How is that you two Swamis cannot heal her? I accept that I have failed and that the doctors have also failed." तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, मैं अपनी मान लेता हूँ कि हम भी फेल हो गए, बाकी भी फेल हो गए, भी तुम स्वामीज में तो इतनी शक्ति होती, तुम लोगों ने उसको कैसे हील नहीं किया? कहते मिस्टर जयपुरिया loved his wife immensely and was sobbing in a corner in the room. वो इतना रोने लगे क्योंकि वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे. कहते his sons and in-laws were also crying. I looked at the young Swami and he smiled and asked if there were a flower he could have. कहते क्या कोई फूल है जो मुझे मिल सकता है? वो जो young Swami ने बोला. Here people carry flowers to offer at the shrine, and someone came forward with the red petals of roses. तो किसी के पास लाल गुलाब की पत्तियां थी. The Swami told Mrs. Jaipura to get up. He roughly pulled her arm, forcibly made her sit, and poured a glass of water containing the petals into her mouth while muttering something that nobody knew. तो स्वामी ने क्या किया? उन्होंने वो ग्लास में पानी डाला, उसमें वो पत्तियां डाली और उनके वो जो मिसेस जयपुरिया थे उनके माउथ में डाला और कुछ उन्होंने मटर किया, कुछ जो भी maybe some mantras or something. कहते he then laid her on the bed, covering her with a blanket, and told all the people to get out of the room, saying she will be going into deep sleep now. तो जो भी sages बोलते हैं ना वो हो ही जाता है, इतनी पार होती है उनके शब्दों में. कहते everyone thought that deep sleep meant dying. तो उन्होंने सोचा कि शायद deep sleep का मतलब है कि वो अपने प्राण त्याग देंगी. And they started screaming and crying. We were both smiling at them because Swamiji knew what he meant by saying deep sleep, We were both smiling at them. This was not at all appreciated by them. And the old lady's son said, "You irresponsible people have nothing to lose. You know what? But I have, okay. But I have lost my mom. I have lost my mother. And now you're making fun of us. You are ridiculing. You're mocking at us." The young Swami and I stood outside their house and waited for the woman to wake up. Swami ji ko to pata tha wo jaag jayenge thodi der baad. Her family members were preparing for her cremation. After half an hour, the young Swami asked Mr. Jaipuriya to go inside and be with his wife. He found her sitting up in a perfectly good health. तो उनके sages ने देखो जो भी अपना एक ग्लास में पत्तियां गुलाब की पत्तियां डाल के उनके पिलाया, कोई मंत्र पढ़े और जिस तरह से भी उनको ठीक किया. और कहा उनकी फैमिली सोच रही थी कि तो जाने वाली क्रिमेशन की तैयारी के लिए, पर जब उनके हस्बैंड गए और देखा, his wife was up and about and she was like in the pink of health. Swamiji कहते हैं, "I'm not against medicines and remedies which help in curing diseases, but I love to make others aware of preventive medicines." कहते हैं, "There is another higher way of helping people through the use of willpower." ये तो बिल्कुल सही बात है. अगर बीमारी में भी आप विल पावर को इंटैक्ट रखेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी उससे बाहर आ जाएंगे. और तभी गुरुजी गुरबानी और मंत्र जाप हमें बोलते हैं कि हमें जरूर इनको सुनना चाहिए और इनका उच्चारण करना चाहिए. कि the willpower here means the dynamic will which is created by a one-pointed mind, meditation, and spiritual discipline. In today's medicine, this cultivation of willpower is totally missing. The young Swami accepted the doctor's challenge and became aware of his potential to heal the suffering old lady. अब देखो, अब डॉक्टर ने तो कहा ना हमसे तो कुछ होगा नहीं, तो तुम लोग नहीं कुछ कर सकते स्वामी होके, तो उसीलिए वही चैलेंज ले लिया ना यंग स्वामी ने.
और उसी तरह से देखो उसने अपनी उसको हील भी किया ओल्ड लेडी को। कहते हैं माय एक्सपीरियंस विद मेनी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैव convinced me that in treating diseases the doctor's behavior and use of willpower is more important than other medication। ये बहुत जरूरी है सच में। अगर आपकी विल पावर है ना तो आप किसी भी बीमारी से you can overcome। The more the medical profession understands the fact, the more they will agree with me that they can help humanity not only by using medicine, but also by teaching certain methods of prevention। तो प्रिवेंशन भी अगर सिखा दी जाए ना, ये नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन से ठीक होना है, तो प्रिवेंशन भी अगर सिखा दी जाए तो खैर डॉक्टर्स क्यों सिखाएंगे, नहीं तो उनका तो कारोबार ही बंद हो जाएगा। खैर okay, in this way more patients can be made aware of the inner capacities to heal themselves। No one can believe how much the whole party then adored us and how everybody wanted to give us money, build us houses and present us with cards। So everybody got so captivated ना कि हाँ भी इनमें तो देखो इतनी शक्ति है। They were like पैसा भी देना चाहते थे, घर भी, और इतने इतने महंगे गिफ्ट्स भी, कार्ड्स भी। Together we both smiled and laughed at them। I found out that rich people want to pay for everything with coins and that they even try to bribe renunciates, but for those who are truly on the path of renunciation, riches cannot tempt them। ये तो बिल्कुल सही बात है। कहते जो अमीर लोग हैं ना, एफ्लुएंट हैं, those are filthy rich, वो तो कहते हैं ठीक है अभी पैसा देके कुछ भी इनको renunciates को भी ब्राइब कर सकते हैं। कहते पर उनको पता नहीं है ये जो renunciates होते हैं ना, उनको इस तरह की चीजें टेम्प्ट नहीं कर सकती, वो इन चीजों से ऊपर हैं। कहते those who are already treading the path like to be poorly materially but very rich spiritually। When they compare these higher riches to mere worldly riches, they will not be held back by the charms, temptations and attractions which can obstruct the way of renunciate। ये तो बिल्कुल है, ये जो ऐसी दुनियावी चीजें हैं, ये पैसा, ये दौलत, ये जो भी है, ये चीजें ऑब्स्ट्रक्शन करती हैं renunciates के पाथ में। renunciate कभी भी वो सच्चा renunciate ही नहीं हो सकता जो इन चीजों में इन ट्रैप में फंस जाए। कहते beginners who aspire to जो बिगनर्स होते हैं ना, who aspire to lead an austere life and to follow the path of renunciation often become the victims of such temptation। स्वामी जी कहते हैं जो नाइव है ना, जो नियोफाइट्स होते हैं, जो बिल्कुल नए हैं, वो जरूर इन टेम्पटेशन में फंस सकते हैं। कहते हैं some suffer a setback or may even become mentally deranged। The pleasures of the world are no doubt powerful। Attachment to these pleasures is considered to be the mother of all ignorance। कहते a one-pointed mind, a strong will, and above all the grace of God कहते हैं help a fortunate few to remain above temptation unaffected by these worldly fetters। जिसकी देखो वन पॉइंटेड माइंड हो गया ना, विल पावर स्ट्रॉन्ग हो गई, और उसको जब ईश्वर की भी मेहर मिल जाए तो कहते वो फिर इस टेम्पटेशन में क्यों फंसेगा, वो तो अनअफेक्टेड रहेगा ना। कहते फिर स्वामी जी कहते आई bade goodbye to the members of the party with whom I had visited the shrine in Badrinath। I stayed back with my friend to listen to the music played by a great sage called Parvitkar Maharaj। तो एक पर्वतिकार महाराज थे जो उनका म्यूजिक सुनने के लिए स्वामी जी रुके। कहते we stayed another 6 days in the cave of Pahalari Baba, who was known by the name because he lived only on fruits and milk and came down to the shrine to listen to the sage every morning। कहते his instrument was the Vichitra Veena, which had several strings। तो जो भी वो वीणा बजाते थे ना, उनके काफी उसके स्ट्रिंग्स काफी सारे थे। कहते there was a crowd of 500 people sitting in the corridor of this shrine। Before he started tuning his instrument, he broke the silence and said, blessed ones, I'm tuning my instrument and you can tune yours। कहते मैं अपने इंस्ट्रूमेंट ट्यून कर रहा हूं, तुम अपना ट्यून करो। कहते the chords of life should be tuned properly। How beautifully it's depicted and read। कहते जो आपके लाइफ के कॉर्ड्स है ना, उसकी भी हमें ट्यूनिंग करते रहना चाहिए। It's an art of tune the chords first and then to hold the instrument in a comfortable and steady way। Let you be instruments now, let him play through you। तो ये ईश्वर के लिए कह रहे हैं ना, उसको तुम्हारे थ्रू प्ले करने दो। just surrender yourself, offer this tuned instrument of yours to the musician। जो भी हमारी लाइफ का ये जो है ना, इस ट्यून को ना, इस इंस्ट्रूमेंट के ट्यून को ना, उस जो सबसे बड़ा म्यूजिशियन है, ईश्वर है, उसको समर्पण कर दो। कहते some people understood him, others not। I and my other friend were quietly sitting in a corner and we became attentive after listening to his words। He held his veena in his arms, closed his eyes and started playing on it। If the sitar and guitar along with all the string instruments were played together harmoniously, they could not create such a beautiful melody। कहते वो जो बजा रहा था ना, अगर सब तरह के सितार, गिटार, सब इंस्ट्रूमेंट्स भी इकट्ठे हो जाना, उस तरह की हारमोनियसली कोई नहीं मतलब बज सकते जो
इतनी ब्यूटीफुल मेलोडी उन्होंने प्ले की. कहते the audience did not know the music yet everybody was swaying. He played his instrument for 2.5 hours. He was one musician who really helped me believe that music could also be a means for peace and joy. I call it meditation is music. So we know that Sagaji, music has great power. It's it has universal language. It can heal anyone. Just give me 2 minutes. I'm going to just finish it. कहते, among all the fine arts, the finest is music. Music is not composed of songs, melodies, or words only, but of the most subtle sound, nada. कहते, the vibration that spontaneously inspires all the cells and make them dance. There could be no dance without the vibrations of nada. Because of the nada, the stream of life sings with a particular rhythm and flows through various curves of life, giving its environment a new experience every time. Kehte, the most ancient traveler of this universe is the stream of life that sings and dances in its joy from eternity to eternity. Kehte, in the ecstasy of meeting the beloved, it finally unites with the ocean of bliss. From beginning to end, there is perennial sound, but on various pitches which make 7 keynotes. In music all over the world, there are 7 keynotes, which personify 7 levels of consciousness that depicts the power of 7 number, जैसे कहते हैं ना सारे गामा पा धा नी सा जो भी हैं ये 7 हैं 7 की नोट्स हैं और ये क्या पर्सोनिफाई करते हैं 7 levels of consciousness. कहते these ये जो सरगम की बात हो रही है ना कहते these sounds make one aware of the various levels of consciousness and finally lead one to the fountain of consciousness from where arises a stream of life which vibrates in all directions. In one direction is called music, in another dance, and third painting, and fourth poetry. There is one more form of this sound which is called soundless sound. Insiders alone become aware of that sound which is called anhadnad. Okay, this flows through the vocal cords and it's called music. Kabir says, O Sadhu, lift the veil of ignorance and you'll be one with the beloved. Light the lamp of love in the inner chamber of your being and you will meet the beloved. There you hear the finest of all music, Anhadnad. In the path of devotion, yogis learn to hear the soundless sound, jisko hum Anhadnad kehte hain, the voice of the silence, the perennial music going on in every human heart. But how many of us hear that music? Genuine musicians overwhelmed by this parabhav, ecstasy, chant the words and sing the praises of the beloved. This devotional music has a profound influence in directing the emotional life of an aspirant towards ecstasy and enables him to enjoy the highest moment. This is called meditation in music. No self-effort is necessary, but that which does seem to be necessary is a path, is to kindle a flame of love for the beloved. The path of devotion is the simplest. Swami ji कहते जो devotion का path है वो तो बहुत simple है and leads one to the highest of spiritual ecstasy. पर उससे जो आपको joy और ecstasy मिलती है वो सबसे ऊपर है. कहते love expressed through music is meditation in music. Gradually the mind becomes one-pointed and the day comes when the aspirant starts listening to Anhad Nad. There are numerous and inspiring sounds. With their help, the aspirant attains the highest state of joy. In the path of devotion, music becomes a means of self-realization. After playing the veena, Pavatikar Maharaja went to the silence again. तो देखिए म्यूजिक के बारे में बताया है. म्यूजिक से भी आप मेडिटेटिव स्टेट्स में पहुंच जाते हैं और गुरुजी को तो बहुत ही पसंद है. नटराज है वो, उनको म्यूजिक डांस इन चीजों का बहुत शौक है. जहाँ ये अनहद नाद की बात हुई संगत जी, तो एक बारी जब गुरुजी ने मुझे बोला मैं 1 मिनट खत्म करने से पहले एक सत्संग सुना दूं. गुरुजी कहते भाई मेरा पेट बहुत टाइट है कंजरो, मेरे वास्ते भी कुछ करो, अपने गुरु दा भी कुछ सोचो. तो ऐसे पाठ तो सुबह उठ के करते थे, पर ऐसे क्योंकि बिकॉज आई वाज प्रीटी यंग एट दैट टाइम, ऐसे कोई भी जैसे संगत हम कोई गुरुजी का ऐसे सोच के हमें नहीं पता था. गुरुजी कहते मेरे वास्ते भी कुछ करो, देखो मेरा पेट कितना टाइट है. एंड आई स्टार्टेड गेटिंग अप एट 2 and 3 यू नो, मतलब मैं क्या उठती हूँ तो गुरुजी कराने वाले ना, तो बैठ के ऐसे पाठ करना शुरू कर देना, रोज ऐसे करना. तो जब गुरुजी को मिलना तो गुरुजी ने कहा हाँ हुन मेरा पेट ठीक है, हुन मैं वधिया, हुन ठीक है, हाँ वधिया पाठ करते पे हो, इतने भोले हैं गुरुजी, करने कराने वाले तो आप. तो एक बारी जब मैं बैठी थी, मैं जैसे अनहदनाथ का एकदम से याद आया. तो हमारी तो वैसी कोई तपस्या तो है नहीं, कुछ ऐसा तो कुछ किया नहीं है, बट गुरुजी ने वाकई में कानों में अनहदनाथ सुनाया. वो अनहदनाथ मतलब बयान नहीं किया जा सकता, इट हैज टू बी फेल्ट, यू नो. और मैं
seriously, because I was pretty young, I got scared. I just ran and I pounced on the bed because I couldn't take it. तो मेरे को समझ ही नहीं आया, तो इतना वो मतलब पता था कि अनहदनाथ मतलब ऐसे आवाज आ रही हो उनकी, तो मैं बिल्कुल बेड पे मैंने जंप किया। तो इस तरह से गुरुजी देखो कहाँ पर इन सेजिस को इतनी तपस्या करनी पड़ती है, तो फिर कैसे अनहद नाद, और कहाँ गुरुजी की तो महिमा है, उनकी कृपा है, वो तो ऐसे ही सुनवा देते हैं। और दूसरे जो कबीर जी का है, तो एक बारी मैं बैठी थी तो गुरुजी कहते देख जो कबीर सी उदो कोई पुछता नहीं सी, जो कबीर चले गए तो नहीं, जो कबीर सिगे ते उदो लोकी पत्थर मार दे सिगे, ते जो कबीर चला गया ते उदो देखो याद कर देने। क्योंकि जब भी हम शुरू में जाते थे तो गुरुजी के हमेशा कबीर जी के दोहे लगे होते थे, हमेशा। तो कबीर जी के दोहों में बहुत डेप्थ है। गुरु जी ने कहना इदा ही हुंदा है, जदों कोई चले जाता फिर लोग याद करते ने। तो इस तरह से गुरु जी फिर दोबारा से इट टेक्स टू दोज ब्यूटीफुल मेमोरीज। तो संगत जी माफ कीजिए आज के लिए जो भी गलतियां हुई हैं। थैंक यू गुरु जी। जब ये हम चीजें पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं हम कितने लकी हैं, हमें इतने कठोर रास्ते से नहीं निकलना पड़ा, और आपने जो इतनी सफरिंग्स सबकी लेते हैं, हम यही बस चाहते हैं कि हम सब गुरु जी आपकी जो कही हुई गोल्डन बातें हैं उन पे चलें, अपने आप को इम्प्रूव करें, और किसी का बुरा ना सोचे ना करें, और आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलें। So thank you Sangat ji, thank you Ekta ji, Shilpi ji, thank you Sangat ji for sitting, for giving your precious time, for listening to me। और मेरे जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही what should I say, मैं कह देती हूँ गुरुजी हम नाली का कीड़ा, एक्चुअली हम नथिंग। तो मेरे जैसे इंसान के लिए आप बैठते हैं, सुनते हैं, और करने कराने वाले तो गुरुजी हैं। खैर थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस संगत परिवार and just making us read this precious gems of wisdom. Thank you Guruji, and thank you Sangat ji. Thank you. Thank you, Auntie. Thank you so much. And thank you, Sangat ji, for joining. Anantam Shukrana, Guruji. Jai Guruji, Shukrana, Guruji.